accepted by the different, by the globe, by the universe to maintain such kind of things. So your syllabus, it is broadly classified into 4 categories, right? And we will discuss 4 unit, no? And we will discuss the unit 1 today. And first, we will discuss the concept of disaster. Disaster management, unit 1, we will discuss first, what do you mean by disaster? I mean, samaste janiche disaster mane kon. Disaster means what? See, dear students, if we will analysis what do you mean by disaster? Disaster means it is a sudden occurrence. It is a some kind of hazards. It is a some kind of unpredictable things. If things means it is a some kind of mishap, no? That happen in a fraction of second. Without means what? Here what will happen? It is kind of a means what? It is kind of a destructive situation. It is kind of a unpredictable situation. Bhabiba purbaru bahut kichh hei jaithibo, right? It is a kind of destructive situation. It is a kind of mishap situation. It is a kind of hazard situation. It is a kind of unpredictable situation. It can happen. जोटा कि हमें भाभी नथिबा, बहुत किछि लाइफ रे प्लान करथिबा, बहुत किछि चिंता करथिबा. Before that, something will happen. Those things will means what? Means it will change our life. No, those things will change our situation. जोटा कि एमिति आम सहित हुए. ते सब कोन काहे कि हुए? What are the reason? को type of disaster अछि जोटा कि this is unpredictable in nature. It is highly destructive in nature. It is highly beyond imagination in nature. कौन से disaster अछि? हमें ताको केमति face करिबा, how to face it, how to manage it, what are the causes, what are the effect, what are the precautions. No, ए सबु हमें पेपर रे discussion करिबा, right? So disaster जोटा कि हमें day to day life रे already बहुत जिंस जानि छे. एटा होची हम day to day life रे situation, no? हमें जोटा कि face करूची और day to day life रे हमें मध्य जानि छे, ताको हमें एटी भल्ला भाबरे पढिबा. Right? Now, what do you mean by disaster? Chintiki, I mean, kemte define kariba disaster ko? Disaster is a sudden event that causes large-scale damage of life, property, as well as the social aspect. Disaster is a sudden effect. It is a kind of destructive things. It is a kind of unpredictable nature. Disaster it is a kind of hazards. Due to this, it can damage the large scale of life. Life, it may be the life leads to human life leads to pets, animals, birds, samastankara life could destroy kartaba. So life, it damages the life, property, the valuable property of the people, right? So it can valuable property of the society, destroy the valuable property as well as the people property as well as the society. And ultimately for this disaster, the society, state and nation face a lot of problem. A disaster kiye face problem kochi, lokamane problem face kochindi, society problem face kochi, nation madhya problem face kochi. So disaster, it is a sudden occurrence without any imagination, without any chinta kariba purbaru something will happen, right? So it is a kind of mishap, it is a kind of hazards, right? And it faced by the every person in the society, and it can happen. It habbo. Natural disaster. It can happen. Now, why it will happen? Kahi ki habo? Karana amaro kichita fault rochi seti pa habo. So ame kon tara reason seta ko ame analysis kari. So this is the meaning of, dear students. This is the meaning of disaster. Types of disaster. Tale disaster kitte prakar achi? See, the types of disaster, it is broadly classified into 2 categories. One is natural disaster. Second one is man-made disaster. Natural disaster, the entire part, it is there in your unit 1. Man-made disaster, it is the entire part, it is there in your unit 2. As already I told you, right? So that is the unit 1. That is the natural disaster. Types of disaster, what I told you? Types of disaster, it is broadly classified into 2 parts.
One is the natural disaster. Second one is the man-made disaster. Natural disaster again classified into variety type. तामाने कौन है ला? Natural disaster पुनी variety type रे classified है. से सबो कौन? ना natural disaster. First we can say it is the disaster kind of land movement and territorial disaster. Land movement and territorial disaster. जोटा कि कहाँ सहित हबो ना हमर अर्थ land सहित हबो जोटा कि. So it's a disaster कौन? What it include? It including avalanches, earthquake, landslide, volcanic eruption. कौन रहिला? Now under the it including land movement disaster, land सहित कौन कौन disaster होची? सेटे चारि प्रकार disaster होची related to land. हैला territorial disaster जो तामे कहूची, other name of the land disaster. जे कौन? Avalanches. Avalanches माने students कौन? Avalanches means हमें कही बाकी that is the one kind of we can say जोटा कि that is the snow flow in the mountain. Avalanches. Avalanches कौन कही बा जेमती कि snow flow in the mountain. ता माने देखिबो इटा generally it is not there in Odisha. हमें इटा ओडिसा रे देखि परिबानी. But in case of Himalaya region, हमें आप ऊपर एक chapter पढ़िबा पूरा. हैला what do you mean by avalanches? What are the causes? What are the effects? What are the consequences? देखो पढ़िबा हमें. हैला so इटा कौन होची generally this avalanches kind of things you can see in case of the where the snow area like Himalaya regions you can see the avalanches. You can see this kind of things in case of Jammu Kashmir. You can see this kind of hazards in case of the Nathula Pass. You can see this kind of situation in case of Ladakh. ये सब area हमें मान देखिबा, right? So ये सब area रे देखिबा कोने snow avalanches जोटा कि पूरा खसी की आसीबो पूरा बहुत सारा बरफ जोटा कि destroy कर देबो बहुत किछ जिनिस जोटा कि हमें माने बहुत टाइम रे देखि छै एना जस्ट हेतिला नाथुला पास रे snow avalanches बहुत लोकंकर डेथ हे जाइतिला, right? So এটা property human life केमती destroy करे सेटा को हमें पढ़िबा. That is the avalanches. Earthquake, we all are aware about the earthquake. What do you mean by this? Earthquake kahin ki hua? What is the causes? What is the effect? What is the situation? What is the consequence? Why it happened? Just apore hame earthquake discussion kariba. One chapter we will discuss earthquake. Type pore hame earthquake ko jiba. Hela? Then asila kona landslide. Landslide again. The landslide it cannot happen in a normal area like in a plain area. Plain area re landslide ta hoboni. Landslide where it will happen? It can happen in a hilly area. Hilly area is generally landslide way. And jodi tamo adhikar upare landslide dekhiba ku chaiba. So the vulnerable area, landslide area, it is the Uttarakhand, Jammu Kashmir. But Odisha re kouti hobo? Koraput, Kalahandi, Malkanagiri. से सब जो एरिया अछि हिली एरिया हमर ओडिसा रे सो सेठी हमर लैंडस्लाइड देखिया को मिले. But landslide it will not happen in case of area like Bhubaneswar. It will landslide because it is a plain area. Landslide it can only happen in the hilly area. जत्ते सब hilly area रे रहउचंती पूरा हमर इंडिया रे लोक माने से माने बहुत variety रे landslide फेस करचंती जोटा कि vulnerable area, right? Then हमें कहबा volcanic eruption. Volcanic eruption it is a kind of things no volcano lava जोटा कि बाहरिबो. So taro what is the reason of volcanic eruption? It is related to land and it can happen in a where it is again it is mountain reta habo. So dear students, land movement disaster and terrestrial disaster it related to avalanches mane rakhibe pura clearly. आ भितरे कोन include होची? Avalanches, earthquake, landslide and volcanic eruption. One chapter, it is there in your unit 1. We will discuss clearly what is the causes, what is the effect, what is the consequence, and what are the steps we will take to minimize such kind of things, right? Then next, we will discuss water, or we can call it as a aquatic disaster. It means water-related disaster. Water, aquatic, both are same, right? So, किछटे disaster अछि एटा हमें कोन ऊपर कोन discussion करने land related, but तापरे से कोन no water and aquatic related disaster. What are the water and aquatic related disaster? It including
floods, tsunami, as well as tidal wave. There are three most important disasters related to weather or water. Also, we can call as a aquatic. So, flood, एना just आमर हेतिला आमे समस्ते जानिचे फेस करिचे कोठी हेतिला फ्लड ना आमर जो आसिला विपर्या आसिला कोठी गुजरात रे Arabian Sea रे आसिला विपर्या. So due to the viparya, the cyclone leads to flood. Due to the heavy rain, जोटा कि दुईटा कामरेटी कवर हैला. cyclone पाई बोली flood ये हैला. किंतु कौन खाली heavy rain पाई cyclone पाई flood हुए? No, flood we can basically declare flood. It is the causes of variety things. No, due to the variety reason we can declare as a flood. खाली heavy rain पाई नुआ कि खाली cyclone पाई नुआ. Right, so say got a disaster related to what water, tsunami, जोटा कि हमें जानी चे काहे की tsunami है, what is the reason of tsunami केबे हेतिला कोठी हेतिला तार causes कौन थिला तार consequence कौन हैला, that is the things we will discuss, as well as the tidal wave जोटा कि हमरो it is कौन, what is the causes of reasons of tidal wave काहे की हुए, and these three things are the water related as well as the aquatic related, though every persons are facing problem. It means it affects the life, property, everything. Life, it is the human life as well as the we can say the wildlife, as well as the pet, as well as the animals, as well as the property losses by the nation as well as the society due to the water related disaster. এই যে তিনি প্রকার ডিজাস্টার আসলা আমি আকু গোটে গোটে চ্যাপ্টার আগକୁ ডিসকশন করিবা গলা নেক্সট চলন্তু নেক্সট আসলা weather related disaster or we can call it as atmospheric related disaster. Weather or atmosphere both are same. So weather in the atmospheric related disaster having it including so many things आ भितरे बहुत किछ include होला से सब कोन ना it including blizzards हैला. प्रथम आसला जोटा कि आमे कहिबा कोन ना वेदर रिलेटेड डिजास्टर इट इंक्लूडिंग blizzard माने कोन हेवी आइस फॉल जोटा कि आमे जानी छे सब जिंस सब आमे जानी छे त माने एटी blizzard कोन हैला ना हेवी आइस फॉल कोडी आइस फॉल लबो द हेवी आइस फॉल इन अ डिफरेंट एरिया जोटा कि आमे एई ना कहिबा कोरापुट एरिया रे हमरो हिट समर जते बेले चलतिला ड्यू टू दी हमरो जो वर्षा हला वर्षा की खाली आइस ही फॉल हला चारियाडे वर्षा हलानी टोटली चारियाडे खाली आइस फॉल हला राइट हेवी आइस फॉल एमिति आइस फॉल हला जोटा कि पूरा रास्ता घाट पूरा सब जाम बंद हे गला सो ताको हमें कहबा blizzards राइट. Blizzards means it is a heavy ice fall in a particular area. It may be the basically we can say plain area, it may be the other area. So जोटा को हमें कहबा heavy ice fall जोठी हला ताको हमें कहले blizzard जोथि पाई कौन होची it affect the agriculture, it affect the road, it affect the human life, it affect everything पूरा सब डैमेज कर दबो नष्ट कर दबो राइट. सेटा हला blizzards काहे को हुए that we will discuss. Then cyclone जोटा कि एई ना जस्ट हमर विपर्या आसला cyclone जोटा कि अरेबियन सी रे हितिला जोटा कि गुजरात वगैरह पूरा से बेल्ट को पूरा तेज नेस कर देला राइट. जोटा कि हमें कहबा cyclone storm. What is the reason of cyclonic storm and how it forms? Cyclone ta kemti form हुए, how to form a cyclone, how to form a means केमिति form है कि केमिति तार गोटे पूरा सिचुएशन को गोटे डिजास्टर आकार से कन्वर्ट करे नो कौन एमती करे जोटा कि साइक्लोन कोठी फॉर्म हुए where it formed को एरिया रे को फॉर्म करा जाए को एरिया रे फॉर्म हुए एंड काहे कि से डिजास्टर रे रूप नहीं जदि हमें कहबा many cyclone we have faced in our life. आम लाइफ रे हमें 99 जदि साइक्लोन सुपर साइक्लोन तो देखि के आसीबा मेनी साइक्लोन जोटा कि हमें साइक्लोन चैप्टर रे गोटे गोटे तरह एग्जांपल सहित पढिबा राइट. 99 सुपर साइक्लोन तो नेकी आज पर्यंत हमें कितने साइक्लोन फेस करलेनी काहे कि व्हाट इज द रीजन वेयर इट फॉर्म व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस काहे कि हम आको रोकी पारुने ए सब हमें आको डिस्कशन करबा. देन असला ड्रट्स कौन ड्रट हला सुखा पड़ी जिबा पूरा राइट जोटा कि पूरा सुखा पड़िबा काहे कि ड्यू टू दी वेराइटी काइंड ऑफ रीजंस इज देयर. वर्षा बिल्कुल हबनी ड्यू टू दी
That is the basically देखो आम ये कौन कहूचे आम गोटे कहावत अच्छी जल बहुले सृष्टि नाश जल विहुने सृष्टि नाश. More water, it leads to problem. Less water, it leads to problem. More water, it leads to disaster. Less water, it leads to disaster. ସେଇଟା କିଏ ଦେଖଉଛି cyclone and drought. Cyclone drought ହେଲେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି factor. Cyclone due to heavy rain, due to heavy water, it leads to flood. Cyclone, flood kind of things. That is the heavy rain. It is there in the particular region, particular area. But drought कहीं गेला बिल्कुल वर्षा नहीं. Complete lean water. Stuck on lead करिबो drought situation हब. Drought रू कौन हब? Drought रू we can face lots of problem. One chapter we will discuss later. The सबो गोटे chapter अच्छी students माने में discussion करिबा. Then असला hailstorms. Hailstorms कौन? जोटे क्या में कहिबा ना hailstorms. Hailstorms अल्ला basically हमें कहिबा से one kind of what it is a I mean कहिबा कि hill माने it is related to hilly area, no hailstorms. It is related hilly area. It kind of disaster. It is a kind of storms means it is a kind of icefall kind of situation. It is a storm kind of situation. It is there in a hilly area. Thunderstorm, we know that thunderstorm माने कौन हमें जानिचे हैला. And tornadoes. Tornado कौन? Tornado है जोटा कि हमें कहूचे गोल गोल बुलुथुबो खंडिया भूत जोटा कि हमें छुआ बेले कहउतिले गोल गोल बुली किरी पूरा बहुत सारा जोटा कि पूरा ये करथुबो डिजास्टर करथुबो. टर्नाडो गोल गोल खंडिया भूत मन रखिबे हैला गोल गोल विंग्स जोटा कि बहुत हेवी पवन है कि पूरा तरह हेवी विंग्स है कि हेवी विंड है कि जोटा कि पूरा गोल गोल ताको ये करथुबो कवर करथुबो हैला ताको कहगला टर्नाडोस. सो ए सब असला कोन these are the things related to co-related disaster, weather atmospheric related disaster. Apart from these, lightning, जोटा कि हमें जानी चाहिए lightning and thunderstorm. Then apart from this, heat wave and cold wave, जोटा कि हमारे heat wave है ना चली थी ला last यही ना हमारा आस्तिला monsoon तापुर कौन चलतिला चारी अड़े खाली heat wave चलतिला. What is the reason of heat wave? How we can declare as a heat wave? कौन है हम heat wave declare करिबा काहे कि होची heat wave कौन reason कौन heat wave हबार reason कौन cold wave हबार just opposite of the heat wave we can declare as a cold wave. What is the reason of the heat wave and cold wave? हैला एटा कोन एमती मनु कहि जाउची किस तो गोटे reason अछि without the reason किछि होएनी. So कौन reason है सब? So say this is the things it related to what? It related to weather and atmospheric related disaster. एतिके मन रखिबे कहां अंडर रे हमरो water weather related disaster under variety kind of disaster related to weather. Then चलो to biological disaster. Biological disaster कौन? Now biological disaster having the disaster it including epidemic and famine. See, epidemic, biological disaster, ma'am. You can ask me the question, ma'am, how biological disaster is a natural disaster? See, suppose the disaster related to natural, then we can declare as a natural disaster. If the things is related to man-made, biological disaster, we can cover in both the area. It related to man-made, it related to natural. दुईटा को बेरा में को कवर करी. जदि सेटा man-made होइतिबो biological ता man-made होइतिबो, then it is a man-made disaster. If it is a natural kind of thing, we can declare as a natural disaster. Epidemic. Jodi area में गोटे example ना बा. If we will take the example of coronavirus, epidemic situation, pandemic situation, world suffer, world पूरा suffer कला से situation रे. तो एटा जदि तमे कहिबो, no, that is created by someone else as a person created that things, then we can cover it as a man-made. जो गोटे लोक क्रिएट करिछि then man-made. किंतु आज पर्यंत तो हमें जानि छै कि एटा नेचुरल. गोटे बर्ड रो आसिला गोटे पक्षी रो आसिला से पक्षी कौन से सब ये थिला. It is a different kind of birds. It is there in a particular area of area in a China. China रो गोटे से particular Wuhan area रो जोटा कि आइडेंटिफाई करा गला से टू एटा एक्सटेंड कला पूरा वर्ल्ड को जोटा कि आज पर्यंत हमें जानि छै. जदि एटा ह्यूमन क्रिएटेड बाय ह्यूमन, देन हमें आको ह्यूमन ये रे रखिबा मैन मेड रे. बाकी जो एटा होची पूरा कंप्लीटली डिपेंड कोची सिचुएशन ऊपर. जदि एटा मैन एटा जदि नेचुरल जदि क्रिएटेड एक्चुअली बर्ड होईची, देन ताको हमें एपिडेमिक जोटा कि वर्ल्ड सफर कला आज पर्यंत गोटे हम लाइफ में गोटे माने ब्लैक एरिया हमें देखि के आछे. नो famine. See, what is the difference between epidemic and famine?
देखंतु एपिडेमिक आमे कहबा जोटा कि आमे कहबा पैंडेमिक एपिडेमिक जोतरे कि पूरा बहु एरिया सफर करिवे न जोटा कि बहुत लोक बहुत एरिया बहुत कंट्री सफर करिवो जति एटा गोटे बड़ आकार रे हला जोटा कि हमर एग्जांपल रे आमे कोरोना नबा कोरोना वायरस सेटा को आमे एपिडेमिक कहबा फैमिन हला गोटे स्मॉल एरिया सफर करिवो गोटे स्मॉल जेमति कि आमे फैमिन रे कोन कहबा नंक दुर्भिक्ष जोटा कि केते बेले हितिला नंक दुर्भिक्ष आज का डेट रे नंक दुर्भिक्ष अछि सेटा नाही किंतु आमे जदि कहबा एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द British period, no, during the East India Company, during the British period, the famine, it was famine declared by the British government at the koti declare katla Bengal re famine jota ki non katra bukya, lakhs of people die at that particular moment jota ki famine non katra bukya ame कहबा हला खाइबा पई पाइलेनी केही सब बहुत पूरा पुक माछि परि मरले सो सेही टाइम रे हमर famine declare हेतिला तामाने एना आम कंट्री रे होनी अदर कंट्री रे होची फैमिली आम कंट्री रे हमर बहुत सारा हमें रिकवरी हे सालेनी तापर हम जेतेले इंडिया इंडिपेंडेंस हैला बट तामाने कोन अदर कंट्री रे फैमिली नै अछि सो बायोलॉजिकल डिजास्टर इट मे बी द मैन मेड इट मे बी द ह्यूमन जदि हम एडी एग्जांपल कहबा जदि बायोलॉजिकल डिजास्टर जोटा कि हमर डिजास्टर रिलेटेड टू बर्ड डिजास्टर रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ थिंग्स नो जदि हमें कहबा बायोलॉजिकल डिजास्टर धर हमें कहबा कि डेंगू हैला डेंगूटा कोन बायोलॉजिकल डेंगूटा कोन मैन मेड डिजास्टर नो हमें सेटा को भी हमें नहीं परिबा बायोलॉजिकल डिजास्टर रे बर्ड फ्लू होची बर्ड मानकर जो फ्लू होची जोटा कि हमें टोटली चिकन पूरा अवॉइड करूचे बर्ड फ्लू रे हैला सेटा कोन मैन मेड डिजास्टर दैट इज अ नेचुरल डिजास्टर बायोलॉजिकल डिजास्टर जेमति कि हमें कहबा कि कोन ना स्वाइन फ्लू हैला जोटा कि हमर पिक्स मान को डिजीज होची सेटा कोन मैन मेड डिजास्टर दैट इज द नेचुरल डिजास्टर सो जदि हमें बायोलॉजिकल डिजास्टर रेटी नबा सो डिजास्टर इट रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ एपिडेमिक different kind of famine it leads to different the things related to bird the things related to what any kind of no any kind of no the things related to animals the things related to bird सेटा जोटा हमर स्प्रेड करची चारियाडे सेटा को हमें कहबा बायोलॉजिकल डिजास्टर एंड इट इज नेचुरल हला डियर स्टूडेंट्स आई होप कि एतिकी पूरा बुझितिबे कोन करिवे एटी आपण मानकर काम कोन the type of disaster you have to divide into a 4 part natural types of disaster first you have to classify into 2 parts that is a natural disaster as well as the man-made disaster natural disaster again you have to divide into 4 part 4 part ru kaha under ke jachi jomma bhulibe nai jota ki one is a land movement second one is the aquatic third one is the weather fourth one is the what biological disaster it including the natural types of disaster let's discuss the man-made disaster so natural asla tala man-made disaster achi human taku create karuchi seta to nature re achi jota ki causes effect ame bhoguche a ame taku try korche ame taku control kariba but something it is that the man-made disaster that created by men doing by men disaster that basically kahi ki hue lokanko pai hue semana creator hele loko se sabu kon it including industrial disaster जोटा कि इंडस्ट्रियल रिलेटेड डिजास्टर इट लीड्स टू इंडस्ट्री जेमति कि हम कहबा डिफरेंट फैक्ट्रीज माइंस डिफरेंट फैक्ट्री माइन रे जो सब डिजास्टर हुए इंडस्ट्री रिलेटेड डिजास्टर बहु प्रकार डिजास्टर हुए राइट फैक्ट्री माइंस वगैरह रे जोटा कि हम कहबा केमिकल डिजास्टर सेकंड वन इज द केमिकल डिजास्टर इंडस्ट्रियल डिजास्टर कुडी फैक्ट्री माइंस रे हुए डिजास्टर सब बहुत लोक मरती बहुत लोकंकर डेथ हुए केमिकल डिजास्टर आम आगु पढ़ा पूरा पढ़ा या गोटे चैप्टर पढ़ा केमिकल डिजास्टर जोटे कि इन केस ऑफ द एमिशंस ऑफ द फ्यूम्स एंड गैस इन ए पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर मींस इंडस्ट्री गोटे इंडस्ट्री रू कोन हैला ना फ्यूम और गैस बाला जोटे कि हम एग्जांपल नहीं परिबा भोपाल ट्रेजेडी इट वाज द बिग ट्रेजेडी सेति ताको पूरा समस्त मन रखचे बट आज का डेट एमिति भोपाल ट्रेजेडी परी छोटो मोटो ट्रेजेडी डेली होची छोटो मोटो ट्रेजेडी विद इन द इंडस्ट्री राइट बहुत लोग सफर करछंती बहुत लोकन को डेथ होची बट भोपाल ट्रेजेडी इट वाज अ बिग ट्रेजेडी सेति में हम समस्त गोटे एग्जांपल रे ताको नोची सो सेटा कि जोटा कि हमर कोन हितला केमिकल डिजास्टर दैट इज एमिशंस ऑफ फ्यूम्स एंड गैस
सेटा गोटे disaster, that is a man-made disaster. That was a man-made disaster. Technological disaster. Technological, that is kind of technological disaster due to the using of poor technology, poor machinery, some kind of accident. जेमती कि हमें technology use करले कोउथरे ब्रिज बनेले गोटे technology use करले एमिति technology use करले ब्रिज भुसली पला disaster हैला ना गोटे बिल्डिंग बनेले पूरा 10 ताला 10 महल रे बिल्डिंग बनेले एमिति technology use करले बिल्डिंग भुसली पला तो एटा technological disaster हैला I mean due to the using हमें कौन कले एटी ना the particular person used particular the while the person used the technique, that is a poor technique and poor technology. The machinery, it may be that is not up to date machinery. हम सेटा को नहीं परिबे टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर. न्यूक्लियर डिजास्टर हमें समझते जानी छे. ऑयल स्पिल्स कौन ना ऑयल स्पिल्स अलग की डिजास्टर जेमती कि हमें कौन करिबा जेमती कि it oil spill, it is related to the ocean, it related to sea. जेमती कि हमें कौन करिबा ना गोटे कंट्री रो आ गोटे कंट्री को हमर आछि कोन डिफरेंट हमर पेट्रोल आछि डीजल आछि करप्शंस आछि से सब आछि सेटा कोन हबो ना सी रे पूरा लीकेज हे जिवो पूरा एंटायर ऑयल स्पिल हे जिवो. So it is the kind of things it will face the aquatic life as well as the human life. That is the oil spills. It is a kind of man-made disaster. Hela building fire, coal fire, building रे निया लागिला coal fire हला ए सब गोटे डैम फेल्योर हे गला. डैम कोन फेल्योर हला भांगी गला. धरंतु हमर ए जो संबलपुर जे हिचे राउरकेला जो संबलपुर जो डैम हिचे से डैम ता भांगी जिवो कोन हबो ओडिसा डुबी जिवो. ओडिसा पूरा डिस्ट्रॉय हे जिवो. डैम फेल्योर हे गला. वार होची जोटा कि हमर वार ने कोन चलची रशिया एंड यूक्रेन वार. आज पर्यंत कोन डिस्ट्रॉय हिची मैन मेड डिजास्टर दुई जन कर इगो पाई एपटे पुतिन को सेपटे हमर यूक्रेन रो जो से महान व्यक्ति सो दुई जनकर इगो पाई कहि कि पूरा यूक्रेन शहर पूरा ध्वंस हो गला. आज का डेट रे ना पास्ट यूक्रेन प्रेजेंट यूक्रेन हमें चिनी पारि बानी. बहुत सारा लोक कोन कले से माने लोक माने को तो डेथ हला छाड़ो सो लोक माने बहुत सारा आज का डेट रे सफर होचंदी. So this is the war we can say. जोटे कि आजिकल डेट रे हमें देखि पाउची राइट. टेररिस्ट अटैक कहबा किछि दरकार नै. हमें जानि छ व्हाट डू यू मीन बाय टेररिस्ट अटैक. बायोलॉजिकल डिजास्टर, if the disaster is natural then we can declare as a natural disaster. If the disaster is man made then we can declare as a man made disaster. जदि कोरोना वायरस ता man created by a man then we can declare as a man made disaster. If that is created by a bird then we can declare as a natural disaster. Seithi biological disaster, it is there in both the part. It is there in the man-made as well as the natural. Crime, variety kind of crime. Crime madam केमिति crime टा गोटे disaster हैला. crime टा disaster नो जेमति कि हमें कोन करछे थेफ्ट करूछे जेमति कि हमें कोन करछे ड्रग अब्यूज, थेफ्ट, किडनैपिंग, मर्डर बहुत प्रकार हमें कोन करछे activity रे crime variety kind of crime से कौन होची ultimately हमें कौन कले. disaster means what? Disaster means it affect the human, it affect the human life, it affect the जोटा कि it affect the human life, it affect the property, it affect everything. So it affect hela na human life. So कौन crime, कौन reason of crime, what are the causes of crime, and it is purely man-made that we will discuss. And global warming, present day environment हमें इतिहास कोडी पहुंचले. Ice age true. If once upon a time the world it was there in a ice cover, ice age to warm age. The present situation, it is a warming situation. The globe is there in a going to warm. Now jodi ei warming situation rahila 2050 बेलू को destroy हबा start करिबो and 21st century complete हबा भितरे world टा पूरा destroy हो जाइतिबो. Global warming, and it is the man-made. एटा क्रिएटर किए ग्लोबल वार्मिंग रो मनीष को क्रिएट के कला मनीष क्रिएट कला. दिस इज प्योरली मैन मेड. हाउ केमिति ग्लोबल वार्मिंग हैला काहे की हैला व्हाट इज द कॉज को पूरा भल्ला भाबरे पड़ी हैला. तो डियर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ डिजास्टर as already I told you, it is natural as well as the man made. So आपको एमिति सुंदर भाबरे मने रखिबे what it including natural disaster and what it including man made disaster. हमर सरी गला concept and type जोटा कि तो ए जो टाइप हमें ना डिस्कशन करले
This type we will discuss clearly in your one chapter. Ei jo hela gote chapter. Aku ame clearly discussion kariba. Kouti kon hoji, what is the causes, what is the effect, what is the situation, what is the consequence, why it occur. ए सब ako ame gote chapter re छोटे chapter re ako, but it is a very beautiful chapter. ame जानिचे but ame किछि जिंस आउरी मध्य जानिबा दरकार. सेटा को ame एटी कंप्लीट करबा. हला. So let's turn to types of disaster. First start kariba kono earthquake ru start kariba as a natural disaster, as a natural hazards. Natural disaster, natural hazards vitre first ame discussion kon kariba earthquake. Earthquake is a kind of situation, no? Earthquake रे कोन होय देखु चंती आपण पिक्चर कोन डिस्ट्रॉय हेची. एई नामर earthquake पिला माने कोठी हितिला आमे जदी देखि कहिबा 2023 रे जो earthquake आमे निज लाइफ रे देखि छे आमे देखि माने आमे देखि छे टीवी थ्रू टीवी देखि छे कोठी हितिला ना टर्की एंड सीरिया रे जो earthquake हितिला in this year 2023 तर magnitude level केते थिला 7.8 magnitude level. गोटे एमिति डिजास्टर कोला आसेकी. It is a earthquake is a sudden disaster. It is a sudden event. It is a sudden effect. भाबिबा पूर्वरु आमे गोटे प्लान करिचे कोन एई ना प्लान करिचे कि 10 o'clock को मु जिबी कोन करबी रेडी हेबी ऑफिस जिबी देन मु एई सब काम करबी एई सब एरिया को जिबी एई ना कोन हबो within a fraction of second मु किछि भाबिबा पूर्वरु कोन जाइथिबो गोटे एमिति डिजास्टर हे जाइथिबो जोटा कि ना आगुआ हम जदि हमें कहिबा एना फ्लड हमें जदि कहिबा ना साइक्लोन हमें मींस कोन करे IMD Indian Meteorological Department, it can ever the people, it can ever the society, no, this thing will happen, it habo koi ki हम आगुआ जानि परुचे, right? In case of हमें जदि कहिबा कोठी ना drought, it is not a one day situation, means it will not declare in a one night and in a one day. Drought केमती it is a slow process, धीरे हबो किंतु धीरे हबो, it can happen. But earthquake neither, nobody will ever neither the एमिति हम पाखरे आज का डेट रे टेक्नोलॉजी नाही जोटा कि earthquake को आइडेंटिफाई करा जिवो. आसुची टेक्नोलॉजी आसुची डेवलप टेक्नोलॉजी आसुची, but in the present environment this type of technology it is not adapted, it is not developed by the world to identify the earthquake. So earthquake रे कोन होची हमें भाबिबा पूर्वरु इमेजिन करिबा पूर्वरु गोटे एमिति गोटे चेंज आस जाउची, एमिति गोटे लाइफ रो गोटे लाइफ रो गोटे डिफरेंट टर्निंग आस जाउची नो, जोटा कि हमें आखि खोली बंद करके खोलिबा पूर्वरु पूरा destroy, right? So earthquake is a highly unpredictable in nature. Unpredictable. हमें कौनसी चिंता करि परिबानी, कौनसी भाबी परिबानी. Life will go in a different angle. No, it is highly unpredictable and it is highly destructive in nature. जोटा कि बहुत सारा destroy करिके चले जिवो, and it is unpredictable in nature. कौन example देले ना, if we can analyze cyclone, if we can analyze drought, then drought it will happen, it is a natural, but it is धीरे हेकी जिवो. गोटे दिन रे कोन डिक्लेयर कर देबा हम drought को. No, cyclone हमको at least ever करा जाछि जोटा कि हमें कोन करछे हमें से अनुसार स्टेप नउछे, but it is कौनसी awareness नहीं, कौनसी ये नहीं, right? So it is a kind of natural disaster. So earthquake केमिति हुए. See, हमरो जदि हमें कहिबा the point of origin of the earthquake, basically we can say it originate inside the earth. Earthquake it originate at the depth of the 50 to 100 kilometer inside the earth. Earthquake टा कोठी होची ना earth भीतरे जोटा कि 50 to 100 kilometer inside the depth of the earth. सेठु हमर earthquake टा कोन होची originate होची, generate होची, create होची. So the origin point जो generate होची हम से point को कौन कहूची inside the earth, inside 50 to 100 kilometer, as already I told you, ताको हमें कौन कहिले, that we can call as a seismic point, that we can call as a focus point,
राइट से जो 50 to 100 किलोमीटर तले जो हमर गोटे स्टार्ट हैला क्रिएट हैला जो पॉइंट को जो पर्टिकुलर पॉइंट हमर अर्थक्वेक स्टार्ट हैला सेही पॉइंट को हमें कोन कहउछ सिस्मिक पॉइंट और फोकस पॉइंट तो जेते बेले से भीतर स्टार्ट हैला से आसी कोन करिवो हिट करिवो कोड हिट करिवो ऊपर जोटा कि that is the upper part of the earth surface जोटी से आसी हिट करिवो in the upper part of the earth surface we can call as a epicenter ता माने जोटा कि आमे तळु क्रिएट जोडु हैला ताको कहबा सिस्मिक पॉइंट एंड द फोकस पॉइंट एंड जोटी आसी कि पर्टिकुलर एंगल रे हिट करिवो ऊपरे upper part of the earth surface that we can call as a epicenter तो सेठी गोटिए जगह रे हिट करिवो बट सारा एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय करिवो हिट हबो गोटे जगह रे डिस्ट्रॉय हबो सबु आडे राइट सो तार इत्ते जे तार माने कोन थिबो कहिलो तार प्रेशर इत्ते थिबो जोटा कि से चारियाडे डिस्ट्रॉय करिवो तो डियर स्टूडेंट्स एडी जदी हमें कहिबा ए जो दैट आइडेंटिफाइड अर्थक्वेक हबो जेमति हमर कहिबा कि साइक्लोन पई हमर की आइडेंटिफाई करे हीट वेव कोल्ड वेव पई की आइडेंटिफाई करे दैट इज द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो जदी हमें कहबा अर्थक्वेक को की आइडेंटिफाई करे अर्थक्वेक कोन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करे नो हु आइडेंटिफाइड द अर्थक्वेक ना सम साइंटिस्ट माने अर्थक्वेक को आइडेंटिफाई करंती हु स्टडी करंती जो माने स्टडी करंती अर्थक्वेक को हु स्टडीड द अर्थक्वेक वी कैन कॉल एज ए सिस्मोलॉजिस्ट ता माने एडी कोन हैला हमर स्टार्टिंग पॉइंट को कोन कोन गेला सिस्मिक पॉइंट और फोकस पॉइंट तो एई जो को जे स्टडी कला अर्थक्वेक को जे स्टडी कला the seismic wave को जे स्टडी कला ताको कोन कहा गेला सिस्मोलॉजिस्ट द साइंटिस्ट वी कैन कॉल एज ए सिस्मोलॉजिस्ट सो इति कोन हला फर्स्ट कोन बुझिलो स्टार्टिंग हम तळु स्टार्ट हबो जोटा कि हम एपिसेंटर फोकस पॉइंट कहबा ऊपर जोटा कि और सरफेस ऊपर जोटा इसके हिट करबो that is the seismic point focus point ऊपर जोटी के आसे के हिट करबो हम ताको कहबा एपिसेंटर आको जे एनालिसिस कोची जो साइंटिस्ट हम ताको कोन कहले ना सिस्मोलॉजिस्ट हला अच्छा हमर अर्थक्वेक जते अर्थक्वेक हबो तो कोन हबो जनरली सी अर्थक्वेक मींस shaking of the earth surface shake हे जिवो अर्थ जोटा कि पूरा बहुत जोर से हमर माने हली जीवो अर्थ को इट इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर as already I told you earthquake it is vibration and shaking of the earth mane rakhiba ko lekhibe emti what do you mean by earthquake means it is shaking and vibration on the earth surface right कहीं की जब वाइब्रेशन और शेकिंग हला अर्थ सरफेस रो दैट वी कैन कॉल्ड एज ए अर्थक्वेक सो सडन वाइब्रेशन एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इन द अंडर ऑफ द अर्थ सरफेस in the basically internal part and external inside the earth and outer part of the earth due to the tectonic plates the movement of the tectonic plates आरो एई वाटा को मन रखिबे earthquake काहे को है ना the movement of the tectonic plate रो जेतेले मूव हुए अर्थ भितरे सेते बेले कोन हुए earthquake हुए so the most important factor related to earthquake is the movement of the tectonic plate जेतेले अर्थ भितरे टेक्टोनिक प्लेट रो मूवमेंट हुए हमर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट सहित अदर टेक्टोनिक प्लेट जेतेले हिट हुए तो सेते बेले कोन हुए सेडी पूरा ब्लास्ट हुए डिजास्टर हुए राइट सो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट सहित अदर कंट्री टेक्टोनिक प्लेट्स अदर एरिया टेक्टोनिक प्लेट्स सेतेले हिट करे वन टेक्टोनिक प्लेट्स टू अदर टेक्टोनिक प्लेट्स ड्यू टू दिस सिचुएशन देन इट लीड्स टू अर्थक्वेक सेटी अर्थक्वेक हमर आसे जेते बेले अर्थक्वेक आसे तार गोटे अच्छे कोन ना रेटिंग स्केल जोटे कि हम रेट करि परिबा जो जो अर्थक्वेक को हमें मापी परिबा जोटे को हमें कोन कहूचे रिक्टर स्केल हमें कहूचे राइट सो रिक्टर स्केल हमें कोन करिबा ना वी कैन आइडेंटिफाई द मैग्नीट्यूड केते परिमाण रे हिट करिछि मैग्नीट्यूड लेवल ऑफ द अर्थक्वेक and the magnitude of the wave the magnitude of the earthquake we can analysis through a richter scale जोटा कि आमे ताको आइडेंटिफाई करबा गोटे स्केल अछि 1 to 10 भितरे तार परिमाण किते परिमाण रे सेठी डिस्ट्रॉय करिछि नो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द मैग्नीट्यूड लेवल ऑफ द अर्थक्वेक थ्रू ए रिक्टर स्केल
जो थे कि हमें कहिबा इट डियर स्टूडेंट्स हमें जदि एठी कहिबा earthquake it is somehow it is very low damage पांचटा भाग रे इट डिवाइड करा जायछि it related to very low damage again it is low damage moderate high and very destructive in nature and it is very high earthquake zone हमें एठी कहि परिबा तो जदि हमें एठी कहिबा very low जोटा कि हमको फील भी हबनी एटा केते बेले एटा प्राय होउथाय इनर मींस द इंटर मींस हमर लोअर लेवल ऑफ द अर्थ सरफेस एटा प्राय टेक्टोनिक प्लेट रो मोमेंट रे एटा प्राय होउथाय जोटा कि हम फील करूने सेटा केते ना इट इज बेसिकली हमें कहबा 2.1 जते बेले हमर सिचुएशन रहउची 1 to 2 जो रहउची 1 to 2 भितरे जोटा कि 2 on less than 2 हला सेटी इट इज अ वेरी लेस काइंड ऑफ सिचुएशन हमें कहि परिबा जदि एटा आसी गला ओवर 5 हे गला 5 हेले कोन हबो ना जदि ओवर 5 को चली गला 5.1 को चली गला रिक्टर स्केल रे तो कोन हबो ना इट कैन बेसिकली फॉलिंग दी थिंग्स डैमेज दी थिंग्स माने जदि कि हम घर रो किछि शोपीस रखि साची कि पड़ी जिवो जेटा कि 5 पॉइंट जदि रहिला शोपीस रखि साची कि पड़ी जिवो पूरा हली जीवो चेक कर दबो जेमति कि पूरा बहुत सारा हमें बहुत टाइम रे हम भुवनेश्वर रे भी फेस करूची नो बहुत सारा जिंस आसी के पड़ी जीवो हमें बहुत सारा माने ये फेस करियो कि जो डैमेज एते जो डिस्ट्रक्टिव और डैमेज हबनी राइट जदि सेटा 6.1 ओवर को पळेला सो एटा कोन हबो ना इफ द अर्थक्वेक द रिक्टर स्केल रे जदि हमर 6.1 एबव कला सो हम एटी कहबा इट इज ए हाई काइंड ऑफ सिचुएशन एटी हाई आसी गला सिचुएशन and जदि इट 7 पॉइंट एबव चली गला जोटा कि टर्की सीरिया रे 2023 रे 7.8 रेक्टर स्केल रे आइडेंटिफाई करा गला and you can analysis the present situation of the Turkey and Syria if it is more than 7 in a Richter scale then it is a very harsh situation if we can identify it is more than 9 जदि 9 को ये टच करि देला then कौन हबो जानछन जे 7.8 रो जदि टर्की सीरिया रो सिचुएशन है देन 9 जते हमर हेतिला 9 पॉइंट रेक्टर स्केल रे हेतिला कोठी ना जते बेले 2011 रे जापान रो सुनामी आसीथिला सेठी हेतिला केते ना 9 पॉइंट रेक्टर स्केल रे हेतिला earthquake if the earthquake it is there in a plain area then earth रे जदि एटा हला हमको earthquake कहले if the earthquake it is the basic things it is there in a ocean it is there in a sea जदि हमर एटा समुद्र रेला ओशन रेला सी रेला सेटा को हमें कोन कहले ना सुनामी सो दुईटा को earthquake और जदि हला अर्थ रे जदि प्लेन एरिया रे हमें ताको earthquake कहले जदि सेटा हमर ओशन रेला तो हमें ताको सुनामी कहले जेटा कि 9 पॉइंट रेक्टर स्केल रे कोठ हेतिला जापान रे 2011 रे जोटा कि जापान सुनामी हमें ऑलरेडी समझते जानी छे राइट एंड हमें जदि हम इंडिया रे कहबा से 2011 जोटा कि जापान रे सुनामी आसिला से 2000 हमर 2000 हम इंडिया रे हितिला 2001 रे गुजरात रे भुज रे हितिला 7.7 रेक्टर स्केल रे मैग्नीट्यूड लेवल थिला जोटा कि 26 जनवरी 2001 रे हमर हाईली डिस्ट्रॉय हितिला गुजरात रे भुज एरिया रे right so these are some example of basically what जोटा कि महाराष्ट्र रे 2022 रे हितला 3.4 रेक्टर स्केल जोटा कि फील हे नतला खाली कन जिंस सब एंती पड़ी जाइतिला सब एपर सेपटे ना फॉलिंग द थिंग्स नो so these are the example of I mean we can take the example of 2023 Turkey Syria 7.8 रे जोटा हितला हमर जोटा हितला 7.7 2001 भुज गुजरात रे हितला नो जोटा कि हमें कहबा जापान 2011 सुनामी आसथिला 9 पॉइंट रेक्टर स्केल रे राइट एंड 2000 हमर 22 रे हेतिला 15 नवंबर महाराष्ट्र रे जोटा कि 3.4 जोटा कि जिंस पड़िला डिजास्टर हे नथिला right so these are the some things basically related we can say the earthquake jodi hame kahiba in India the vulnerable zone of earthquake कोठी ए सब वल्नरेबल एरिया कोठी ना अर्थक्वेक जोटी के एक्चुअली रे हिट करिवार वल्नरेबल एरिया जदि हमें नबा गुजरात महाराष्ट्र राइट जदि हमें नबा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड
Sikkim, Darjeeling, ए सब हैला गोटे गोटे vulnerable area where the heat, the change of the tectonic plate, the movement of the tectonic plate, and basically it is the more means the we can analyze that it can happen in this particular area, right? So dear students, तमे कौन कहिले what do you mean by earthquake? First time मन रखिबे एटी concept रे हम next move करिया पूर्व कौन हैला what do you mean by earthquake? सेटा कोडी create होची so inter surface of the earth, internal surface of the earth जोथिरे कि हमें कौन कहले focus point और seismic point जोथिरे upper असला हमें epidemic हमें ताको कौन कहिले जो upper surface को हमें असले ताको epicenter कहिले ताको identify किए कुछ scientist मान identify करछोदी ताको हमें seismologist कहिले तो हमर earthquake को हमें कोथि identify करिया तो wave को magnitude level को Richter scale रे करिबा and तारो point होची 1 to 10 भितरे हमें already example रे ताको पढिले. Now what do you mean by earthquake? Earthquake काहा को कहिबा it is a shaking of the earth surface जोटा कि shaking करिबो vibration करिबो sudden effect without any means it is our beyond imagination भाबिबा किछि पूर्वरु किछिटा हमको अवेयर करिबा पूर्वरु केही हमको अवेयर करना थिबे सेइतरे there is no awareness, there is no means any kind of before awareness, no. So it is so it is unpredictable in nature and it is highly destructive and disaster in nature. So this is what the basically concept of earthquake. Acha dear students, so what are the causes of earthquake? I already पढ़िले मैम causes कौन ना causes रे तो हमें देखिले कौन due to the movement of the tectonic plate, due to the movement of the हमें कौन हैला heat of the one tectonic plate to other tectonic plate जेतले heat कला गोटे को आगोटे सहित surface को तो inside the earth 50 to 100 kilometer. This is the causes of earthquake. खाली कौन से गोटे tectonic plate रो causes अछि causes आउरी बहुत अछि तो कौन causes असला dear students तो हमें जदि एठी कहबा what are the causes of the earthquake हमें कौन कहले causes of पहला one is the tectonic plate, movement of the tectonic plate, heat of the tectonic plate. Second हैला volcanic eruption. जदि volcanic eruption हैला मध्य volcanic eruption कोठी हबो हिल एरिया रे mountain रे हबो volcanic eruption. Due to the volcanic eruption it leads to earthquake. Volcanic eruption leads to earthquake. Earthquake leads to volcanic eruption. दुई जण हैला भाई भौणी हैला तो जदि volcanic eruption हैला ताले earthquake हबार चांसेस अछि जदि earthquake हैला volcanic eruption हबार चांसेस अछि दुईटा को दुई जण सहित interrelated to each other. केमिति सेटा हम volcanic eruption रे again पढिबा due to the खाली tectonic plate volcanic eruption mining एते परिमाण रे mining means एते परिमाण रे तळ को खोदेई हबो एते परिमाण रे तळ को खोला जिवो mining रे एते परिमाण रे हमें कोन करबा ताको हिट करबा earth को ultimately कोन हबो हमर आसीबो कोन disaster ही disaster. So disaster कोन earthquake it leads to earthquake. Underground atomic test जदि हमर अंडरग्राउंड किछ एटॉमिक टेस्ट ला ताले का को हिट करिवो अर्थ को हिट करिवो अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट ला अर्थ जदि हिट हला सेतले कोन हबो अर्थक्वेक हबो डिजास्टर करिवो जदि हमें किछ गोटे बिग डैम खोलुचे जेमति का लाइक अस माइनिंग हमें कोइला पई खोलिले एटी हमें किछ गोटे हमें कोन ना गोटे डैम खोलिले सो डैम बिग डैम इट इज बेसिकली हमें इत्ते तळु को खोली चली गले सो सेटु कोन हला इट अफेक्ट द टेक्टोनिक प्लेट. So while it affects the inner surface of the earth, so it will affect so many things and it can destroy and it leads to earthquake. So what is the causes of earthquake? So earthquake तो हमें first concept लिखिबो ता माने कोन करिवे concept लिखिला पर ता माने कोन करिवे definition लिखिबे definition पर कोन जिवे causes जिवे causes रे कोन हम तो tectonic plate जानिले volcanic eruption through tectonic plate our tectonic plate volcanic eruption हुए volcanic eruption हेले earthquake मध्य हुए and mining underground atomic test and big dam on the earth surface so due to this reason it leads to earthquake एई सब कारणरु हमर कोन हुए ना earthquake हुए so जदि एई सब कारणरु हमर earthquake हैला ताहाले हम इफेक्ट्स कोन फेस करबा what is the effect of an earthquake कोन इफेक्ट रहउची इफेक्ट हैला जोटा कि हमें लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग पेट्स एंड एनिमल कौन इफेक्ट कला इट इज द लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यू कैन टेक द एग्जांपल द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द टर्की एंड सीरिया रे एग्जांपल नहीं परिबो जोथरे कि केते लोकंकर डेथ हैला हां मेनी पीपल डाई ड्यू टू दिस वल्नरेबल सिचुएशन ड्यू टू दिस द
but due to this it is basically destructive situation. Many people die. Khali kono lok male, pets male, animals got a death hela, pets got their death hela. So ultimately earthquake kill many people. एते लोकन को पूरा समस्त को कौन करिवो kill many people जोटा कि हमें हमर लाइफ रे बहुत टाइम रे एग्जांपल हमें टीवी रे देखुचे. It kill people, it kill pets, it kill animal, it kill also the wildlife. समस्त को ये destroy कर दबो. ता छडा कौन करिवो? It affect the economic condition, it affect the economic factor, loss of the economic things. टर्की सीरिया रे खाली कोन लोक मले सब बिल्डिंग भांगी गला, सब घर ध्वंस होई गला, सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग आम एठी जदी नबा large amount of building, large amount of infrastructure, electric pole, pipelines, house, building, road, railway, जत्ते जत्ते जिंसो को आम एठी नहीं परिबा सब कोन हला destroy ही destroy. जोटा कि आमे तारो एग्जांपल एठी आमे मो सेति पे एठी पिक्चर रे देछि. तो देखंतु को प्रकार डिस्ट्रॉय हेबो. बिल्डिंग भुसड़ी गला, पाइपलाइन चली गला, इलेक्ट्रिसिटी चली गला, हां ए सबु हे कि पूरा चारियाडे विध्वंस करि देला. सो कोन हैला इटो? सो बेसिकली एटा कोन इफेक्ट करिवो ना हमर एठी इफेक्ट कला इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द कंट्री. कंट्री रो इकोनॉमिक लॉस कला पर कंट्री बहुत तळु को चली जिवो. कारण ताको सेटा पुनी अगेन डेवलप करबा पई इट विल टेक के बुड हम डेवलप करि आसले. एंड इफ वी विल टेक द अगेन स्टेप टू डेवलप दिस ना इट विल टेक मच मोर टाइम, बहुत टाइम हमको लागे. सो एटी हमर इकोनॉमिक लॉस ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक लॉस ऑफ द कंट्री जोटा कि अगेन हमें बहुत तळु को चली जिबा. बिल्डिंग फायर सब बिल्डिंग फायर कोन म आगु को कहबी हला. अर्थक्वेक रे बिल्डिंग फायर धरंतु अर्थक्वेक बेले गैस लागिथिला हला. earthquake बोले गैस आपनकर ओपन थिला, आपन तो जाननथिले ना earthquake आसे बोले. इट इज अ सडन इवेंट, सडन इफेक्ट. तो इटी कोन हैला? तो सेही जो गैस रू कोन हैला जेतला earthquake हैला पूरा निया लागिला, बिल्डिंग फायर हबो, चारियाडी निया बापी जिवो. राइट? earthquake थ्रू जदी आपन इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हैला, कोडी कुछ डैमेज अछि, शॉर्ट सर्किट है कि पूरा निया लागिवो. सो इट लीड्स टू फायर, बिल्डिंग फायर. राइट? पॉसिबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर एरिया जोटा कि एटा पॉसिबिलिटी मध्ये अछि. earthquake leads to tsunami म ऑलरेडी कहली जोटा कि एटा कोन इफेक्ट करिवो. एटा जति हमर प्लेन एरिया रहला, अर्थ रहला, अर्थ सरफेस रहला, then we can call as earthquake. If it is there in an ocean, if there it is there in a sea, then we can call as a tsunami जोटा कि म एग्जांपल रे भी कहली जोटा कि हम जापान रो tsunami हेतिला. and it leads to volcanic eruption म ऑलरेडी कहिछि. earthquake leads to volcanic eruption, volcanic eruption leads to earthquake. दुई जना भाई भौणी माने सब हेले भाई भौणी हला. earthquake, tsunami, volcanic eruption ए सब हेले भाई भौणी. आ पई से हबो ता पई ये हबो. सो ए सब हेला हमर कोन हबो इफेक्ट्स हबो. तो अल्टीमेटली हम एठी कोन कले, if we can analyze in a simple manner, ultimately we will face physical loss, social loss as well as the environmental loss. losses कोडी हम फेस कले, physical loss, physical loss कार physical loss, human, pet, animal, wildlife, physical loss. Economic loss जोटा कि हमें कौन कहले, economic loss basically it is the society रो heavy economic means it हमें बहुत तळो को चले जिबा, economic poor condition को चले जिबा. economic loss, financial loss of the society as well as the nation. Right? As well as the environment loss. environment रो कित्ते बडा गोटे loss है. So if we can analyze this in a simple manner, so these are the different effects related to physical, social and environmental effect. So this is the basically causes and effect. Now how we can take the precaution? Ame precaution apan kemiti naba. What are the steps we will take here to basically we can manage the earthquake? Ame precaution kemiti naba apan kon ame step naba, that we will discuss here. Students, I hope कि समस्ते बुझी जाइथिबे कि कोन पूरा हाथ उठै दिचंती. पिला माने पूरा क्लियर बुझिलो. जो माने डिजास्टर मैनेजमेंट को पेपर नहीं चंती पूरा बुझी गले. स्टूडेंट्स, हैव यू एनी डाउट? स्टूडेंट्स, yes or no? Yes madam. Okay. हला आको ए वाइज मन रखिबे. Yes, okay. ठीक अछि.
आपण माने जदि माने ये न करिवे कोन कहले डिस्टर्ब न करिवे ताले हमें टू वे क्लास करिवा टू वे कम्युनिकेशन करिवा हैला जदि डिस्टर्ब करछन्ती सेति पा हम वन वे कम्युनिकेशन कर दोछु जदि डिस्टर्ब न करिवे देन वी विल कंटिन्यू द क्लास इन ए टू वे कम्युनिकेशन जेटा कि अधिक ठीक लागिब हैला आपण माने आपणकर पूरा डाउट भी क्लियर करि परिबे सो ओके थैंक यू सो मच समस्त बुझी गले आकु ए वाइज मने रखिबे हैला व्हाट इज आज जहा जहा डिस्कशन कले and tomorrow we will continue earthquake complete kariba tikke rahila then we will move to the next chapter landslide volcanic eruption jaha jaha asla hame next discussion kariba hela so thank you so much bye bye good day